The study of internal structures of a metal or alloy in relation to its physical and mechanical properties under a microscope is called metallography. यहाँ कंडीशन दी गई है, अंडर अ माइक्रोस्कोप हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल और अलॉय की इन रिलेशन फिजिकल और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अंडर अ माइक्रोस्कोप is called metallography. Or when the structure of metal is seen with naked eye या by low power magnification, then it is said to be a macrography. और इसका ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व स्ट्रक्चर कहलाता है मैक्रो स्ट्रक्चर. तो macrography, that means when the structure of metal, when the structure of a metal is seen with naked eye or by a low power magnification, then is said to be a macrography. और and the observed structure वो कहलाएगा microstructure. On the other hand, when the structure of the metal is seen at high magnification, then it is said to be a micrography. Micrography क्या है? When the structure of the metal is seen at high magnification, then is said to be a micrography, and the observed structure is called microstructure. So these are the terminology. पहली बात करी गई मेटलोग्राफी की. जब मेटलोग्राफी की बात करते हैं तो हम ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हम अध्ययन करते हैं किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल और एलॉयज का, और रिलेशन से स्टेबलाइज देखते हैं फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. सेकेंड, अगर हम उस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स को हम लोग नेकेड आई से देखते हैं, लोग और मैग्निफिकेशंस देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोग्राफी, और इसके ऑब्जर्व स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर. और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को सीन कर रहे हैं एट हाई मैग्निफिकेशन से, जब बात कर रहे हैं हाई मैग्निफिकेशन से हम लोग देख रहे हैं, तो ये कहलाता है माइक्रोग्राफी, और इस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर. हम लोग बात करते हैं अब एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ प्योर आयरन की करते हैं. तो we know that the pure substance may be exist in more than one crystalline form. Pure substance may exist करता है in more than one crystalline form, or each such crystalline form is stable over more or less well-defined limits of temperature and pressure. Each such crystalline form is stable over more या less well-defined limits of temperature and pressure. So this is known as a allotropy या polymorphism. इस नाम से बता सकता है polymorphism या allotropy. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्रिस्टलाइन each such crystalline form is stable over more or less well-defined limits of temperature and pressure. This is known as a allotropy या polymorphism. और जो pure iron exists in the following three allotropic form. A. Alpha iron, which exists from the room temperature to 910 degree Celsius. Alpha iron जो होगा which exists कर रहा है from the room temperature 910 degree Celsius 910 degree Celsius. And the alpha iron is a ferromagnetic. प्रॉपर्टीज में अगर याद करेंगे तो अल्फा आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर, और इसमें जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है इट इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट इज अ BCC स्ट्रक्चर. फर्स्ट that is your alpha iron, and alpha iron which exists from the room temperature at 910 degree Celsius, and the alpha iron is a ferromagnetic. तो आपको ध्यान रखना है 910 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, BCC स्ट्रक्चर एंड ferromagnetic at room temperature. And another that is your gamma iron. Whenever हम लोग बात कर रहे हैं गामा आयरन की, तो गामा आयरन विच एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 910 यानी 910 डिग्री सेल्सियस टू 1404 डिग्री सेल्सियस, 910 से 1404 डिग्री सेल्सियस. These are the gamma existence, the gamma iron existence, or it is a face centered cubic structure. So then gamma iron, that is your face centered cubic structure. And delta iron
which exists between 1404 degrees Celsius to 1539 degrees Celsius. यहाँ पर देख सकते हैं आप टेम्परेचर रेंज दैट इज 1404 डिग्री सेल्सियस टू 1539 डिग्री सेल्सियस. दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन. इट has a body centered cubic structure यानी BCC but has longer cube edge than BCC structure of alpha iron. So these are the allotropic form of pure iron, that is your alpha iron, gamma iron and beta iron. Sorry, alpha iron, gamma iron and delta iron. So alpha iron, that is BCC structure, gamma iron, that is FCC structure, delta iron, that is BCC structure. Temperature range: alpha iron 910 degrees Celsius, gamma iron 910 to 1404 degrees Celsius, and delta iron is 1404 to 1539 degrees Celsius. So this is the allotropic forms of pure iron.